Hello, good afternoon, children. So, today we are going to start with our paper, which is BSLP 504. Hope you all are aware that the topic or the name of the paper is Oral Rehabilitation in Children. So, first I would like to tell you ki what all things we will be covering in this paper. Okay, as the name suggests, oral rehabilitation in children means we will be focusing more on the rehabilitation part of the pediatric population. Okay, so we will be dealing with all the things which we need to consider in their rehab, which will be including what are the degree of hearing loss, age at which the detection is done, what are the effects of hearing loss on their speech and language development, and what all things we need to consider while in during rehabilitation of a child with hearing impairment. So in this we will also be covering what are the educational needs of such children. Okay, what is the role of the family, what is the role of the other professionals which are involved, okay, in this rehab process. Not only the role of the audiologist but also role of parents, the role of other professionals, and what all things are necessary for a rehab of a child. This will not include only hearing aids, but it will also include therapy part, and also it will include what are the educational goals which we will be setting up for the child, as to what all considerations we need to take during the education of a child in a classroom setup, which means that what all modifications you will be making in the classroom, or what all assistive listening devices you will be providing for the child in the classroom setup. Okay, so I have just given you an introduction that what all things we will be covering. So let me tell you that this subject is not something कि आप एकदम उसको बाय हार्ट करके वही चीज वही वैसे का वैसा पेपर में लिख पाओगे, ठीक है। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा बेसिक भी है, और कुछ चीजें हैं जिसमें आपको अपना दिमाग लगा के भी आप जितना आंसर्स में ऐड करोगे वो आपको ऑल मार्क्स गेन करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यूनिट 1 जो है आपका, इट इज ऑडिटरी डेवलपमेंट, स्पोकन कम्युनिकेशन एंड अकूस्टिक एक्सेसिबिलिटी. Okay, so hope you all are aware of what you call as the sensitivity period or the critical period. So what is the sensitivity period for auditory development? Okay, hope in pediatric audiology you have already studied the embryology of the ear. Hope I'm right, and I hope you all remember that hearing begins not after the child is born but before the child is born. Okay, so right from that stage till the child is born, and after that also, what is the auditory development that is taking place in the child is very important. Okay, so if you, what is the sensitive period of auditory development means, so if you want कि एक child का auditory development एकदम अच्छे से हो, his auditory skills, his listening skills should develop very nicely. So for that it is very essential that the child has a good hearing. Okay, so auditory development of a child which who is hearing and a child with hearing impairment is obviously different. Okay, so sensitive period, you know that first 3 years of life है ना, are very important in terms of speech and language development, and speech and language development always depends on your auditory development, ठीक है। You have already studied that auditory development is not something which will happen directly in one day. ऐसा नहीं है कि जैसे चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो डायरेक्टली साउंड लोकलाइज करने लगेगा, या फिर डायरेक्टली वो पहचानने लगेगा कि साउंड सोर्स कहाँ है. Okay, for that you have, hope you all have hearing in children. If you all don't have, your seniors have, so you can take that book from there. And that the entire table is given of the auditory development which takes place. Okay, so when the child is born, आपको इतना तो पता ही होगा कि BOA when we do, first the auditory development is in the form of reflexes. Okay, now before there is development happening before your birth also. So inside what you call as prenatal development, what is the changes you will see is child is able to recognize mother's voice, है ना? And there are studies which are done which is also given in hearing in children when you study embryology, that child is able to
discriminate or at least differentiate between certain vowels and certain phonemes or certain consonants. Okay, so that is there, and child is able to recognize voice also. They have done this with on the basis of what changes in the body movements or what changes in the child is observed inside the womb when the stimulus is given from outside. Okay, now when the child is born, initial stages like initial months or 1 month, 2 month, there is always reflexes which you will observe. What are the reflexes that you will have to by heart, because same will help you in BOI. I hope you all know the full form of BOI, which is behavioral observation audiometry. Okay, so what are the reflexes which you see? Reflexes in the sense that when you give a stimulus or you give a sound or you give a noisemaker, sound through a noisemaker, you will see certain changes. Changes in what? Since the child is very small, infant is very small, so what you will see is there will be changes in the breathing pattern. Okay, there will be changes in the heart rate. There will be cessation of activity. If the child is active, he will suddenly stop, or there will be an activity induced because of a sound. So if the child is sucking, or if the mother is feeding while you are doing the testing, there will be change in the sucking pattern. Okay, so if the rate may increase or the child may suddenly decrease the rate of sucking, or he may stop. Okay, then there is Moro's reflex. Hope you all know what is Moro's reflex. If not, you'll have to find out. Moro's reflex is something which you modified when in adults. It is called as startle. Okay, so that is seen. Then there is crying. Okay, all these are behavioral changes, and there are certain reflexive behaviors and certain there are which are behaviors which you see actually what the child is doing. Okay, then after reflexive behaviors there comes a time in when there is slight little bit of head turn in the sense in the lateral plane the child will start turning his head in view of searching of sound. Okay, and reflexes there are also eye blink, okay, eye widening, frowning, or there are other kinds of reflexes in which the child is eye blinking. Okay, so auditory development next stages there will be obviously in the form of around 4 months the child is lateralizing in the lateral plane. He is trying to move his head in time into search this sound. Okay, then gradually a localization of sound will start coming by 11 to 12 months. So all that entire procedure or entire table is given in which stepwise it is given what all changes will be seen month wise. Okay, localization of sound will kind of come around 11 to 12 months. Now what happens is this is the development which we are talking about is the development which is seen in a typical child who has no hearing loss. Okay, so if a child has certain degree of hearing loss, this auditory development is obviously delayed. Now, what sensitivity period of auditory development means? There are certain amount of it is a period in which by which the localization skills can come. Because with localization, then will follow discrimination, then identification, obviously, and comprehension of sounds. Hope you all know these are the 4 levels of listening. Very important for you all. It will help you in AVT and auditory therapy also. There are 4 levels of listening. Which are the 4 levels? First is detection or awareness. Second is discrimination. Third is identification. And fourth is comprehension. Okay. So if there is with detection, it is important the child has to do localization also. So within that period of time, all his auditory skills should develop. If you know the normal auditory development period, then you are able to detect when you do PUA, you are able to detect whether there is a delay in auditory development, then you can suspect a hearing loss. Okay, so this is very important for you all to have the basic knowledge, okay, of the auditory development. सो दैट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो ना ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको वाइवा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और वो टेबल आपको बाय हार्ट होना चाहिए. इफ़ यू डोंट नो द ऑडिटरी डेवलपमेंट देन इट इज़ ऑफ नो यूज. ठीक है, बिकॉज जब आप BOA भी करोगे, अगर आपको नॉर्मल ऑडिटरी डेवलपमेंट नहीं पता है, बच्चा 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, 3 मंथ का है, उसके हिसाब से उसके ऑडिटरी बिहेवियर्स आपको BOA पे जो मिल रहा है वो सही है या डिलेड है, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे?
ठीक है, उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बाय हार्ट द टेबल, and you should also know the normal auditory development in what period which milestones are achieved. Okay, now this is very important because basic when you start anything basic यही है कि आपका auditory development कैसा है, कैसे हो रहा है, टाइम से हो रहा है या डिलेड है. ठीक है, so you know what which is the critical period. In that period your auditory development should take place. As I have told you, it is not necessary it is taking place only after that. Intra in prenatal auditory hearing और in the womb listening वो भी आपको पढ़ना इसमें जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट और ऑडिटरी डेवलपमेंट, स्पोकन लैंग्वेज एक्विजिशन, पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन. अगर सी यू हैव टू यूज कॉमन सेंस इन दिस पेपर. ओके, यू कैनॉट टेल अरे ये तो हुआ नहीं है, वो तो हुआ नहीं है, ये पढ़ाया नहीं था, वो नहीं पढ़ाया. यू कैन नॉट गो वर्ड बाय वर्ड इन द व्हाट इज गिवन इन द सिलेबस. सिलेबस में दिया है उसके एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपका ये पूरा पेपर कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है. Similar answers you are expected to write in your paper. As I have said, everything you will not find in the textbook in terms of this paper. There are certain topics in which you will get everything in the book. Certain topics you have to use your brains, and for that you have to do a lot of reading. And दूसरा जो lectures या जो information मैं दे रही हूँ, अगर उसको आप शांति से और ध्यान से सुनेंगे तो आप पेपर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिख पाएंगे. ठीक है, so we are talking of impact of hearing impairment, okay, on auditory development. So it is a common sense that if a child is born with a hearing loss, मॉडरेट डिग्री का हो, प्रोफाउंड डिग्री का हो, सिवियर डिग्री का हो या माइल्ड डिग्री का, ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट डिफरेंट लेवल्स का होगा, लेकिन एवरी डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस will definitely have an impact on the development, not only of auditory development, speech and language development also. How? सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि ऑडिटरी डेवलपमेंट में क्या है, जैसे कि आपको साउंड आया तो आपका पैटर्न डेवलप हो रहा है, बिहेवियर से आप पता चलेगा ऑडिटरी डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं. ओके, so if a child has come to you for BOA and then the hearing of that child is normal, so you will get very good responses unless the child is obviously stable. Okay, the child is awake and not widely awake or in light sleep. If the child is in deep sleep, you will not get any response. That doesn't mean the child has hearing loss. Be very careful when you are interpreting anything in BOA. Okay, BOA जब आप पढ़ोगे या आपने होपफुली पढ़ा होगा या पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजी में जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो BOA इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिटेक्शन. You will get a rough idea about the child's hearing. But when you do BOA, there are certain things you need to consider while doing the test. अगर चाइल्ड एकदम डीप स्लीप में है तो आप BOA नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आप चाहे कितना भी साउंड स्टिमुलस दे दीजिए वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा. Then you cannot write that there is no response, child is not responding, query so and so hearing loss. Your entire diagnosis, your interpretation and your testing is wrong. ठीक है, बेस्ट BOA जो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिक कब होगा, जब चाइल्ड लाइट स्लीप में है या अवेक है. If they are widely awake and very active, then also you will not get consistent responses. Be very careful with my words also and when you do the testing also. आप जो responses बच्चे में देख रहे हैं और आप नोट डाउन करोगे ना, वो consistent रहने चाहिए. Consistent मतलब क्या होता है, that when you are giving the stimulus that response is coming. ऐसा नहीं कि आप नहीं दे रहे हो तभी भी रिस्पॉन्स आ रहा है तो भी आप नोट डाउन करके उसको लिख रहे हो, दैट इज रॉन्ग. Okay, another thing is when you present the stimulus, child should not be able to see you. अगर विजुअल अपीयरेंस दिख रहा है बच्चे को स्टिमुलस का तो वो उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स है, वो आपका कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं होगा. समझ में आया? ठीक है, so now what we are talking about how it will impact on your auditory development. So obviously when you do BOA there are certain things which we see. एक तो आप नॉइज मेकर कौन सा यूज कर रहे हो. Different noise makers have different range of frequencies and we take all range of frequencies. Why? Because we need to get an idea about the child's hearing in all the frequency range. ठीक है, उस sorry
उसमें भी हम लोग क्या देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं। 3 फीट है, 5 फीट है, 6 फीट है, 1 फीट है, नियर ईयर है, किस डिस्टेंस पे चाइल्ड रिस्पॉन्स कर रहा है, वो ऑल्सो मैटर्स. अदर थिंग, what is this intensity of the stimulus you are presenting to get the response. ठीक है. सपोज मैं अगर मॉडरेट स्टिमुलस पे 5 फीट पे भी मैं दे रही हूँ, चाइल्ड रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ठीक है, सब एवरीथिंग इज ओके, सो हियरिंग कैन बी नॉर्मल. बट इफ अ चाइल्ड हैज हियरिंग लॉस, he will not be able to hear when I do at 5 feet. Then you come at 3 feet. 3 feet पे सुनाई दे रहा है तो मॉडरेट स्टिमुलस पे सुनाई दे रहा है, या मॉडरेटली लाउड स्टिमुलस पे सुनाई दे रहा है, या एकदम लाउड स्टिमुलस पे सुनाई दे रहा है. ये चीजें भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो दैट. Because if there is moderately loud stimulus or loud stimulus, based on that you will suspect whether there is a hearing loss. ठीक है. ये सब चीजें why I am discussing, because this is very important in order to get an idea about child's hearing. कि see, he is responding, but at what level. ठीक है, at what level is he responding, in what distance, is it near ear, 1 feet, 3 feet या 5 feet. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है. So, if there is obviously a hearing loss, all these behaviors will not be achieved. Am I right? क्यों? क्योंकि hearing loss है, child is not able to hear, he is not getting any auditory feedback. Obviously his auditory developmental जो behaviors हम हैं वो develop ही नहीं होंगे, क्योंकि जब उसको sound ही नहीं सुनाई दे रहा है तो वो क्या reflexive behaviors या क्या behaviors देगा वो. If he is hearing very loud stimulus, then you will get that response at very loud stimulus. एंड इफ इट इज अ प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, तो आपको स्टार्टर नहीं मिलेगा, मोरोस रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा. कॉमन सेंस है, क्योंकि एकदम लाउड स्टिमुलस में ही उसको जस्ट डिटेक्ट हो रहा है, तो उसमें वो क्या रिफ्लेक्स देगा. ठीक है. सो ऑडिटरी डेवलपमेंट इज ऑब्वियसली अफेक्टेड, एवरीथिंग विल गो बिहाइंड बाय सम अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन. अगर उसको माइल्ड मॉडरेट लॉस है तो उसका डेवलपमेंट ऑडिटरी क्या है, थोड़ा पीछे चलेगा. Profound hearing loss है तो his auditory skills or listening skills don't develop only. Why? Because child is not able to hear anything. His auditory listening skills will start developing when you fit the child with a hearing aid or when you fit the child with an amplification device. Then उसका डिटेक्शन आएगा. ठीक है. धीरे धीरे लोकलाइजेशन आएगा, फिर उसका डिस्क्रिमिनेशन आएगा, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन आएगा. करेक्ट. तो ऑब्वियसली वो उसके पीरियड से पीछे चल रहा है. So that is the reason why auditory development will be delayed in case of hearing impairment or hearing loss. ठीक है. Next, obviously speech and language will delay क्यों होगा. Now hopefully I don't know whether you still remember या ये common sense है कि normal speech and language development के लिए कुछ prerequisites चाहिए, जो I'm so sure आपने पढ़ा है पेपर में. Hopefully पढ़ा होगा language के papers में. ठीक है. सो डेवलपमेंट स्पोकन लैंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, हियरिंग. बिकॉज स्पोकन लैंग्वेज, सी आई एम टॉकिंग अबाउट, सी इट इज वेरी पर्टिकुलर, द वर्ड इज गिवन स्पोकन लैंग्वेज. So it is not written language, it is not any other language but spoken language. Why? Because the primary mode of giving stimulus for spoken language is listening or speech. So if my auditory skills are good, I will pick up speech. If my auditory skills are not good, I will not pick up speech. समझ में आ रहा है? It is common sense. So if I am a person or I am a child with normal hearing sensitivity, I will be able to hear all the speech sounds. I will be able to hear all the speech stimulation which I am getting. My speech and language development will happen from the time which is the critical period, or it will happen at its normal pace and everything will be okay. लेकिन अगर मुझे hearing loss है, ठीक है, तो मैंने amplification device use नहीं करती हूँ. So obviously there is no stimulus which I am getting through auditory mode. If I am not getting any stimulus through auditory mode, then obviously my spoken language will not come.
Prerequisite for normal speech and language development is a good amount or hearing within normal limit. That is a one major prerequisite factor. If I have any degree of hearing loss, my speech and language development will be affected and 100% it will be delayed. Correct? Why? Because it is whatever stimulus I am getting, it is not typical speech, it is atypical speech. अगर मुझे माइल्ड टू मॉडरेट लॉस है तो मुझे डिस्टॉर्टेड स्पीच मिल रही है, मुझे डिस्टॉर्टेड स्पीच मिल रही है तो उसमें मुझे सुनने में जितना आ रहा है उसमें से भी 50%, 40%, 20% मुझे सुनने में आ रहा है, उतने में मैं क्या सीखूंगी? हाउ मच स्पीच विल कम? नथिंग. Profound hearing loss, obviously, there is no auditory input without amplification device is nothing, because speech हमेशा हमारा normal moderate intensity level पे होता है. It is never at loud levels. So if it is a moderate intensity level का sound कहाँ से profound loss वाले को सुनाई देगा? So he is not able to hear the speech. Obviously he is not able to hear, so obviously he is not able to perceive or comprehend or take in anything. Processing ही नहीं हो रहा है information. क्यों? क्योंकि वो कान तक वो चीज पहुंची नहीं है. Okay, so if that processing is not happening, obviously there will be no outcome. There is no comprehension of what you are telling is not happening only. Obviously comprehension नहीं हो रहा है तो speech आपका understand करके कुछ बोल पाओगे नहीं. ठीक है. कहने का मतलब क्या है कि अगर hearing loss है, obviously your speech and language will be delayed, because one of the main reasons is नॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज के लिए आपका हियरिंग नॉर्मल होना बहुत जरूरी है. अदर थिंग इज समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अ चाइल्ड हैज अ माइल्ड लॉस जो किसी को पता नहीं चलता है अनलेस द चाइल्ड स्टार्ट्स स्कूलिंग. क्योंकि स्कूल में जब मोर चिल्ड्रन आर सिटिंग और व्हेन ही इज सिटिंग बिहाइंड, टीचर जो बोल रही है उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो देन प्रॉब्लम स्टार्ट अराइजिंग. सो माइल्ड हियरिंग लॉस केसेस को आप कभी ध्यान से देखोगे, उनको स्पीच एंड लैंग्वेज थोड़ी बहुत होगी, लेकिन देयर विल बी आर्टिकुलेशन एरर्स. व्हाई? बिकॉज आपका भले माइल्ड डिग्री ऑफ एनी लॉस, टाइप तो अभी मैं बात ही नहीं कर रही, मैं डिग्री की बात कर रही हूँ. माइल्ड लॉस है तो जब उनके थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर स्पीच है तो वो स्पीच को पकड़ ले जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती. या तो इफ somebody is talking and stimulation is given near ear, child will have no problem. So whatever speech he is getting from near ear stimulation, he will pick up that speech. But when you are talking at a distance or whatever is taught to him from a distance that he is not able to pick up, then there is a problem. He will not be able to understand that speech. So ऐसे बच्चों को आप देखोगे ना, उनकी delayed रहती है speech. They will at least have some amount of speech, but it will be delayed. Why? Phrases में बात करते हैं, एक दो words में बात करते हैं, तो obviously it is delayed. Other thing is in that also they will have a lot of articulation errors. Why? Because they are not able to take anything, everything, all sound characteristics or acoustic properties of the speech sound they are not able to take. ठीक है. So, but see, this is the impact hearing will have on auditory development, speech and language development. समझ में आया? एंड लैंग्वेज अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज अगर नहीं है तो स्पीच कहाँ से आएगी? बट व्हाट हैपेंस विद सच चिल्ड्रन, इट इज नॉट नेसेसरी ओके दैट अगर लिसनिंग या हियरिंग एकदम ही नहीं है तो इनका कुछ डेवलपमेंट ही नहीं होगा. What happens is if there is no auditory input, they start getting relied on visual input. समझ में आ रहा है? विजुअल इनपुट मतलब कि वो विजुअल आपकी लिप रीडिंग है, स्पीच रीडिंग है, ओके, फेशियल एक्सप्रेशंस, दे पिक अप दोज थिंग्स एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. ठीक है. तो वो लोग का इसीलिए बहुत लोग जिनको माइल्ड लॉस रहता है ना, mild loss या max to max moderate, depend if it is a conductive loss then definitely they will have speech. You getting it? Why? Conductive component ही है, न्यूरल कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं है. कंडक्टिव कंपोनेंट है जितना है 20 dB 30 dB, उसके ऊपर आप जाके आवाज दोगे तो बच्चे को सब सुनाई देगा, या आप नियर ईयर बोलोगे तो सब सुनाई देगा. So they develop speech but they also use little bit of speech reading. Why? Because they are able to hear half and थोड़ा वो करके वो पूरा they try to make the sentence whole. whole मतलब कि complete करने की कोशिश करते हैं.
ठीक है। तो स्पोकन लैंग्वेज एक्विजिशन में ऑब्वियसली इट विल बी इम्पैक्ट आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट का पता है। डिफरेंट डिग्रीज का भी मैंने आपको बता दिया। अभी टाइप्स पे आते हैं। कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो उम्मीद है कि उसकी थोड़ी स्पीच होगी। रीजन मैंने आपको बताया, सी इफ ही हैज अ माइल्ड कंडक्टिव हियरिंग लॉस, हियरिंग में उसको इतना दिक्कत नहीं आएगा। इन हियरिंग इन द सेंस इफ आई एम टॉकिंग टू यू near ear or I'm sitting close to you, so he will be able to perceive everything. Only the problem will be when the distance is increased, he will have a little bit problem. उसमें भी मैं लेकिन आवाज रेस करके बोल दूँ तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको सब समझ में आएगा, सुनाई देगा, समझ में सुनाई देगा, ठीक है। And if you have, because I have personally seen a child with conductive loss having good language, obviously he will have articulation. ये कुछ acoustic properties आपके speech sounds की मिस hearing loss की वजह से 100% होती है। Because what you are listening when you have a normal hearing and when you are listening and you have a compromised hearing, there is a lot of difference in the speech perception, obviously, of the sounds, speech sounds which you are perceiving. Okay. Conductive hearing loss moderate degree है, थोड़ा problem होगा, moderately severe, then obviously there is a variation. Sometimes they have speech, sometimes they don't have speech, and if they have, if a child is there, he will talk in phrases and words, not in sentences. ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अनलेस माइल्ड हो, उससे ज्यादा होगा कंडक्टिव लॉस तो फ्रेजेस या वर्ड्स में बात करते हैं, सेंटेंसेस अचीव नहीं होता, इसके ऑब्वियसली डिले तो परसिस्टेंट रहेगा। मिक्स्ड लॉस है, ऑब्वियसली गड़बड़ है, देयर विल बी डिले। सेंसरी न्यूरल लॉस, obviously there is very poor speech perception, whichever degree, there will be problem. Usually in children sensorinely neural hearing loss होगा भी, and if it is a congenital hearing loss, it is always severe to profound. Moderately severe मिल जाएगा, लेकिन very rarely you will get a child having mild sensory neural hearing loss, moderate sensory neural hearing loss. चाइल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब कि अभी हियरिंग इम्पेयरमेंट होगा तो क्या होगा, बचपन से होगा, कंजेनाइटल होगा। यूजुअली कंजेनाइटल हियरिंग इम्पेयरमेंट इज ऑलवेज सिवियर टू प्रोफाउंड. देयर इज नो चांस ऑफ एनी ऑडिटरी स्टिमुलस गोइंग, वेरी लाउड स्टिमुलस साउंड्स पे वो थोड़ा डिटेक्शन मैक्स टू मैक्स होता है, डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी पुअर, ऑब्वियसली स्पीच तो परसीव करना बहुत मुश्किल होता है इन बच्चों के लिए, ओके, एंड दैट इज व्हाई देयर विल बी अ सीवियर डिले इन स्पीच एंड लैंग्वेज. There will be only vocalization or max to max little bit of babbling. ये चीज याद रखना। तो हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया है, we have spoken about development, what hearing impairment impact has on development of the auditory skills, spoken language. Obviously we have spoken about different degrees will have different effects, and different type of hearing loss or hearing impairment will have different effects on the development, ठीक है। अभी पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन में क्या दिक्कत होगी, इफ यू यूज योर कॉमन सेंस और इफ यू जस्ट थिंक, देन अ चाइल्ड विद नॉर्मल हियरिंग है, पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन वेरी गुड। व्हाई? पेरेंट स्टिमुलस दे रहा है, चाइल्ड रिस्पॉन्ड कर रहा है, पेरेंट इज रीइंफोर्सिंग, चाइल्ड इज गेटिंग हैप्पी, ही विल स्पीक मोर, चाइल्ड इज रीइंफोर्सिंग, पेरेंट विल रीइंफोर्स मोर। रीइंफोर्स होपफुली आपको पता है क्या होता है, रीइंफोर्समेंट या रीइंफोर्सिंग अ स्टिमुलस, ठीक है। सो इफ आई एम टेलिंग समथिंग, द चाइल्ड इज हियरिंग इज नॉर्मल, तो वो सुन रहा है, तो वो सुन के वो कॉपी इमिटेट करने की कोशिश करता है, when he imitates something, parent reinforces, so there is a very good parent child communication happening, okay. So now if there is a child with a hearing loss, there will be a lot of issues which a parent faces with a child with of having a child with hearing loss or a child with hearing impairment. क्या दिक्कत होगी? सबसे पहले तो when parent is interacting with the child, when the child is an infant, there will be no response whatsoever, ठीक है। अगर प्रोफाउंड है तो वो क्लियर कट पता चल जाता है, पेरेंट बोलेंगे हम कितना भी बोलते हैं, उसका कोई फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है ना, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना आई ब्लिंक है ना कुछ,
हंसता नहीं है बच्चा जब हम बात करते हैं उसके साथ। कभी कभी यू विल गेट दीज आर द कॉमन थिंग्स द पेरेंट विल टेल यू। जैसे कोई बर्तन गिर गया तो चौंकता नहीं है, कुकर की सीटी बजेगी चौंकता नहीं है। ठीक है, एज कंपेयर टू अ नॉर्मल हियरिंग चाइल्ड, he will startle with at loud sounds. Child with a hearing impairment, parent will have these complaints कि मैडम हम उसको खेलते हैं तो वो हमारी तरफ देखता नहीं है, उसको बुलाते हैं तो नाम की तरफ ध्यान नहीं देता है। Other things, environmental sounds पे there is no response, the parent will tell you this। जैसे कोई बर्तन गिरा जोर से, या मिक्सर चलाया, या कुकर की सीटी बजी, या कहीं बम बोला, या ट्रेन का हॉर्न आया, तो भी मैडम वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देता है। So what happens with parent-child communication in this? Parent is communicating with the child is not able to pick up or perceive auditory stimulus, there is no response from the child. So what happens? It is very, very disappointing for the parent। ठीक है, disappointing for the parent in the sense कि उन निराश हो जाते हैं। निराश हो जाते हैं क्या कि मतलब हम बात कर रहे हैं बच्चे से, लेकिन बच्चा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, they become very anxious, they become very tensed। Why the child is not responding? Does he have a hearing loss? What if he has a hearing loss? Will he be able to hear or no? उसको क्या फिर जिंदगी भर के लिए मैडम मशीन लगाना पड़ेगा? Okay, see what happens is when if you have ever interacted with a parent of a child having hearing loss, it is very very, you have to handle it in a very sensitive way। ठीक है, आप डॉक्टर अपनी जगह हो, लेकिन कुछ जगहों पे आपको सेंसिटिव होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर डूइंग अ बेरा ऑफ अ चाइल्ड, okay, and the child is mother and father, or mother who is sitting, you know, BOA के basis पे या ऐसे, and what the history you have collected or what feedback you have taken from the parent, that the child might be having profound loss। Okay, but you are doing bera since the child is very small, 6 months 4 months you will do bera। ठीक है, बहरा आप कर रहे हो और उसमें कंफर्म हो गया है कि चाइल्ड को प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। Many times what will happen when you are telling the results to a parent, parent will start crying at that very moment। So ऐसा कभी आप ये नहीं कर सकते हो कि अरे मैडम आप संभालिए खुद को, नहीं। यू हैव टू टेल देम, आपको साथ में बैठ के रोने नहीं लगना है पेरेंट के साथ। ओके, आप एक क्या हो, ऑडियोलॉजिस्ट हो। यू आर नॉट somebody who is going to sit and cry with the patient, you have to tell the patient, you have to counsel the patient। So when such situation arises with you, what you need to do is you need to tell the parent, देखिए मैम, आपने जैसे हमें बताया था, हमने भी थोड़ी जांच की थी और इसमें कंफर्म हो गया है। हमें पता था इसको सुनने की दिक्कत तो है ही, इसमें भी कंफर्म हो गया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जिस एज पे, वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल टेल द पेरेंट, वी हैव डिटेक्टेड द हियरिंग लॉस एट अ वेरी गुड एज, एट अ वेरी अर्ली एज। If right now we fit the child with proper hearing aid and start his auditory training or auditory rehab immediately, then he might be able to, have spoken language। So at that time, what will happen is you cannot just sit and cry with the patient. You have to tell what is the alternative solution, or you have to tell something that will calm the patient or parent that time कि ऐसा ऐसा ऑप्शंस है, ऐसा यू हैव टू गिव देम, एंड यू हैव टू गिव देम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ओके, सो नाउ इफ यू हैव डिटेक्टेड हियरिंग लॉस एट द एज ऑफ 4 years, यू कैनॉट टेल वो एकदम अच्छे से बोलने लगेगा। But since 4 years there has been no listening and hearing with the child, obviously you also know it will not be as same spoken language आएगा नहीं आएगा, that will only come to know with what how he is responding to hearing aid or any amplification device, or how he is responding to therapy, because till then the child must have heavily dependent on visual। So you have to use auditory plus visual with such children। But if there is early detection, then there are very good chances that the child will be purely auditory and verbal, not auditory plus visual। Okay? So you have to tell all these things to parent। Now what happens to parent-child communication apart from this? As मैंने बताया कि उसमें वो बात नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं आता, the child is not able to express। See, whenever the child is born, whatever is the age, in this initial stages there will be some mode of communication, crying या कुछ भी,
है ना। उसके बाद थोड़ा सा बैबलिंग आने लगता है, बैबलिंग के बाद थोड़ा सा jargon and then first word, at least something. But if a child has hearing loss, then he has no other mode of talking. Okay, no other mode of talking in the sense he is not able to express because he is not able to hear anything. So see, एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर ऑडिटरी फीडबैक नहीं मिलता है ना, तो कुछ स्पीच से भी आपको जब खुद का ही आवाज नहीं सुनाई देता है या खुद को, तो आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है फॉर स्पीकिंग. Child doesn't realize that he has to talk or he has to communicate through music. Child is not able to communicate. Parent is not able to communicate with the child. Child is not able to express the need. Parents are not able to understand the child's needs. Why? Because he is not able to express. So all these things क्या होता है ना, पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है. कम क्या मतलब, जो पहले ट्राई करते पेरेंट ट्राई करते, दे बिकम वेरी नॉट डिप्रेस्ड बट दे निराश हो जाते हैं. So obviously, how it will impact, you know, it will impact the parent-child communication in this way, which is very bad. Not very bad, but very sad. Okay, because see, it is very frustrating for a parent that he or she is not able to communicate with his own child. या आप लोग को, हम लोग को, या किसी को समझ में नहीं आते unless only the person who has a hearing impaired baby or a baby with hearing impairment is able to understand. ठीक है, because one major thing which you will understand when as and when you see patients is, सबसे पहली चीज तो acceptance of hearing loss parents में बहुत कम होता है, और होता भी है then they take time, which means क्या कि they are not able to accept that their child has a hearing loss. ठीक है, और accept कर भी लेंगे then they are not able to accept that he will have to wear hearing aid for the rest of his life. ठीक है, so major part which you need to include in your assessment when you do with such children, early detection या जो भी आप कर रहे हैं, is you have to counsel the parents very well, because you know parent child communication is very poor. Parent is already depressed or has not depressed and also already very demotivated. उनको लगता है कि बच्चा तो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, ना किसी चीज़ की तरफ ध्यान देता है, ना कोई आवाज़ की तरफ ध्यान देता है, हम कितना ही झुनझुना बजा दे, कुछ भी करे, वो कुछ सुनता ही नहीं है. तो आपको बेसिकली यू हैव टू जस्ट काउंसिल देम हाउ एंड व्हाट दे हैव टू डू. ठीक है, कोई बात नहीं है, होता है, ये सब आपको नहीं बोलना, आपको उसको बेसिकली सिर्फ डायरेक्टली बताना है what is the purpose or what is the thing the child or the parent has to do. Okay, so that is very very important. So hope I am clear about these points what we have done. ठीक है, so what you need to do is handle parents very carefully and sensitively. मैंने बताया है आपको, आपको ऐसा नहीं है कि बैठ के उसके साथ रोने लगना. ठीक है, okay, so hope I am clear with all these things because it is very simple. If you think about it, it is very logical कि क्या impact हो सकता है और क्यों impact करेगा, because you know that speech, language and hearing, everything is interrelated and everything is dependent on each other. If there is no hearing, there will be no language development. If there is no language development, there will be no speech. If the hearing is compromised, there will be delay in language development, there will be delay in speech. Hearing बिल्कुल नहीं है, तो there will be distorted or there will be no language development, there will be no speech. ठीक है, तो बेस्ड ऑन जैसे हमने डिस्कस किया है, डिग्री एंड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस के हिसाब से आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे. इन वेरिएशंस इन व्हाट, इन दी डेवलपमेंट कितना डिले है. Also one of the major factors that is when is the hearing loss detected and is there any rehab done post that. If hearing loss is detected early, fitted with an amplification device early, then the development at age appropriate एकदम ना हो बच्चे का, लेकिन as close as age appropriate आप ला सकते हो. Obviously वो डिपेंड करता है from child to child and from how much therapy is benefiting or how the therapy is going. Understood? ठीक है. So now one thing is there that then will be obviously a lot of factors which will obviously affect auditory development. बहुत सारे factors हैं. ठीक है, तो factors मतलब क्या हो सकते हैं, किस किस टाइप के factors हो सकते हैं.
एक तो आपके प्रीनेटल फैक्टर्स कुछ हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपके बर्थ के बाद तो ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर्स, मतलब कि एट विच द डिटेक्शन इज ऑफ हियरिंग लॉस इज डन, ठीक है। डिटेक्शन के बाद हियरिंग एड या कोई भी एम्पलीफिकेशन डिवाइस का फिटिंग हुआ है नहीं हुआ है। अगर आप डिटेक्शन कर लो बच्चे का 6 महीने की उम्र में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन till 2 years, 3 years, there is no amplification device fitted or there is no auditory training happening with the child. Do you think the auditory development will be good? Obviously not. अगर उसी बच्चे को 6 महीने के उसमें डिटेक्शन हुआ है, 7वें 8वें महीने में हियरिंग एड लगा के आपने उसकी थेरेपी चला दी है, उसका ऑडिटरी डेवलपमेंट, स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट काफी अच्छा होगा एज कम्पेयर टू एनी अदर सेम चाइल्ड विद सेम सिचुएशन बट फिटेड विद हियरिंग एड विद एट द later period of time. So when you talk about factors, there are many factors which will affect your auditory development. Auditory development affect करेंगे मतलब indirectly obviously आपके किसको affect करेंगे, speech and language development को. Okay, how much of spoken language is expected to develop after the fitting of lip. ठीक है. Prenatal factors में जाए कैसे क्या आप बोल सकते हो, जैसे कि what are the, is there any congenital malformations in the formation of the ear? Yes or no? है ना. जैसे कि if I have any cochlear malformations, I am missing auditory nerve, या मेरा कॉकलिया हाफ डेवलप्ड है हाफ नहीं है ना, या तो ऐसी सब चीजें अगर होगी तो ऑब्वियसली मेरा डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा. इट कैन अफेक्ट माय डेवलपमेंट. Obviously it will affect my development. When I get born I will have a hearing loss. ठीक है. तो प्रीनेटल में आप क्या क्या आएगा, आपकी कोई भी फॉर्मेशंस में या डेवलपमेंट, आपका एम्ब्रियोलॉजी के प्रोसेस में अगर कोई भी टाइप का हैम्परिंग है, नर्व डेवलपमेंट में, कॉक्लिया के टर्न्स के डेवलपमेंट में, हाइपोप्लेसिया है, ठीक है, मॉन्डिनीज आपको पता है वो, या आप नहीं भी पता होगा तो एज एंड व्हेन यू रीड, when we will be doing embryology in pediatric audiology, I will be telling you there are lot of congenital malformations. अगर आपका कॉक्लिया ठीक से डेवलप नहीं है, या फिर आपका ऑशियस एकदम क्या बोलते हैं बोनी है, there is no proper functioning of the cochlea, I think anything which is hampering the physiology of the ear, that will also affect your auditory development. Okay, so now what we will do is in next lecture we will discuss all the factors and you will be able to note down what is that when I expected is you will note down all these factors and you have to keep all those factors in mind because when factors are asked आपको सारे factors लिखने हैं, ठीक है. और एवरी फैक्टर का कॉन्सिक्वेंस भी आपको लिखना है कि जैसे ये अगर एज है तो ये एज क्यों है फैक्टर, एज एट विच डिटेक्शन है तो वो क्यों है फैक्टर, कैसे वो अफेक्ट करेगा आपके किसको, ऑडिटरी डेवलपमेंट. ठीक है. So hopefully I want you all to go through this lecture and what is to be done that I will update you on the board. Okay. Hopefully you have understood today's lecture. If there are any doubts, you have to get back to me. Okay. कुछ नहीं समझ में आ रहा है या any doubts है तो आपको मेरे पास कांटेक्ट करना है, हमारा जो ग्रुप है, या थ्रू मेल और व्हाटएवर. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द factors of the auditory development. Okay, that's all for today's lecture. All the best.